So tangent horizon, put r equal to 0 and get the value of theta. Okay, so that's what you have to do. After getting tangent at the horizon, what we will compute? बताइए लास्ट क्लास में क्या हमने डिस्कस range of r. Find the range for r. Okay, find the range for r. I'm not having microphone. Step 4 is what? Provide the value of theta and get value of r. Okay, so provide the values of theta, get values of r. Okay, so these are the steps that we have to apply whenever we are graphing a polar curve. So let us recall an example that we have done in the previous class, or we can start with a new example. Let us take example r is equal to a square cos theta. R is square equal to a square cos theta. The name of the curve is r square equal to a square cos 2 theta. Okay, so draw this curve. The name of this curve is lemniscate. Okay, so we'll check symmetry first. Okay, so symmetry, let us check whether minus r theta, symmetry about x-axis we will check. So check whether minus r theta or r pi minus theta satisfy equation of the curve or not. So replace is the equation of the curve and replace r by minus r and theta by theta. So what is coming out to be minus r square equal to a square cos 2 theta. So that means minus r theta lies on the curve. Lies on the curve. Okay. Next is what? When first point is lying, then we have not to check another point. ठीक है ना? मेरे हिसाब से r minus theta होना चाहिए. अच्छा है. Yes. Because this is the point r theta. So for x-axis it will be minus theta. No? R minus theta. R minus theta. And if we are getting this point, it will be what? This angle is, just a minute, pi minus theta. It will be r pi minus theta and it will be minus r pi minus theta. Okay. So this is r minus theta. We have to make change here also. Yes, I have written wrong. Okay. So r square, a square minus theta. It is coming out to be a square cos 2 theta, है ना? So that means the value r minus theta lying on the curve. Lying on the curve. जब एक सिमेट्री आ गई, then we have not to check another symmetry. चेक कर सकते हैं, हो सकता है दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करे और ना भी करे. ठीक है. Lying on the curve. So we will say it is symmetric about x-axis. So symmetry about x-axis. ठीक है ना? Now we will check another point. Now what is the another point? We have to check symmetry about y-axis. Okay, so what are the points to check symmetry about y-axis? R pi minus theta and minus r minus theta. So check whether r pi minus theta is lying on the curve or not. So r pi minus theta. Okay, so r square
equal to a square cos 2 pi minus theta. So cos 2 pi minus theta. That means it is in the fourth quadrant. So it will be a square cos 2 theta. Clear? So r square equal to a square cos 2 theta, symmetry about y axis. So symmetry about y axis. So I told you if there are any two symmetry, then we have not to check another one. So it is symmetric about origin 2. Okay, now the third, it is symmetric about origin 2. About origin also. Okay, now next. After that, we have to check what is the step 2, tangent at the origin. So next step 2, tangent at the origin. Tangent at origin. So we'll put r equal to 0. When we are putting r equal to 0, curve equation is what? I square a square cos 2 theta. So when we are putting r equal to 0, we are getting cos 2 theta equal to 0. Cos 2 theta is 0 when cos is 0 whenever theta equal to pi by 2, 3 pi by 2. Okay, na? So let us write pi by 2, 3 pi by 2, or like n pi by 2, n is all. So theta equal to what? It is pi by 4, 3 pi by 4, and so on, you can say, or n pi by 2. Actually, we are not writing all values where n is what. Okay, na? So what does it implies? It implies that theta equal to pi by 4 and 3 pi by 4 are the tangent line. ठीक है, उसके ज्यादा भी हो सकती हैं. We don't know at this time कि क्या situation है, but 3 pi by 4, then 5 pi by 4, and so on. So these are the tangent. N equal to 1357. ठीक है ना? Then you have to take n equal to 0 to n plus 1 if it's up to. Now, so these are the, we can say theta equal to pi by 4. Theta equal to pi by 4 is this line. 3 pi by 4 is this line. These are the tangent, है ना? क्योंकि symmetry है, so we can draw other side also, but that will say later on. So tangent at origin, this curve जो होगा वो theta equal to pi by 4 से tangent, like this will be the tangent line. ठीक है ना? तो curve with theta equal to pi by 4. This is there from here. Next step is what? Find the range for r. So step 3. What will the range for r? R square is equal to what? A square cos 2 theta. है ना? So for what will be the maximum value of r here? R square equal to a square, है ना? Because cos 2 theta की maximum जो value होती है, that is 1. Okay. So r will lie between minus a to plus a, we can say, because when cos 2 theta equal to 1, है ना? Maximum value जो cos 2 theta की होती है, that is 1. So we can say r square equal to a square cos 2 theta. It will be less than equal to a square. Okay, so r equal to plus minus, or we can say r is lying between minus a to plus a. तो मैक्सिमम वैल्यू जो r की होगी वो हमारी a होगी. अगर पॉजिटिव के सेंस में देखते हैं, अगर नेगेटिव सेंस में देखते हैं, इट विल बी माइनस a, है ना? दिस इज एक्चुअली मिनिमम, बट डिपेंड कि हम थीटा क्या ले रहे हैं. सो r स्क्वायर, so range of r is what? That is minus a to a. Next step is what? Step 4. Now we'll give different value to theta and get values of r from here. Okay, theta equal to 0, r square equal to what? A square cos 2 theta. ठीक है ना? Theta equal to 0, r will be what? It will be plus minus a. ठीक है ना? Theta equal to 0, r equal to plus minus a. I'm taking only positive value. Like why, I will explain later. Minus value also we can take. ठीक है? Now theta equal to
it is already given to you theta equal to pi by 4 is the tangent line. So we have to give some values in between. Okay, नहीं तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा शेप कैसा है. तो आपको पता है r इक्वल टू a के थीटा इक्वल टू 0 के लिए r की वैल्यू क्या है, दैट इज a. दिस इज द वैल्यू. ठीक है. So theta equal to pi by 6, that is 30 degree. R will be what? That means r square इक्वल टू a स्क्वायर cos 60 हो जाएगा. थीटा इक्वल टू 30 पर cos 60 a by root 2 है ना. a स्क्वायर बाय cos 60 is 1/2. तो r इक्वल टू a by root 2. ठीक है ना. क्लियर. सो if we are taking this is theta equal to 30 degree. Okay, this is pi by 6 line. तो जो हमारा वैल्यू है r का कितना है, दैट इज समथिंग लेस देन लाइक a तो आपका ये है एंड थीटा इक्वल टू pi by 6 पर जो वैल्यू है दैट इज a स्क्वायर बाय रूट 2. Okay, sorry, a by root 2, that is less than a, so you are getting some like this would be the situation, something like that. Okay, theta equal to pi by 4 is what? This curve is touching the x-axis. और इसके बीच में हर जगह हर एक वैल्यू पर थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे you will get the value of r. अब लाइक अभी तो हम जो नोन वैल्यूज होती है हमको जनरली 30, 45 and 60 बनाया. Otherwise you can compute all these values with by your calculator and get proper shape of the curve. ठीक है ना. So this would be the shape. अभी पिछली बार like somebody was asking like how we can say the curve shape will be like that, it will be concave in shape or it may have some other shape also. For that we can compute tangent line. Tangent हम compute करते हैं जैसे कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी टेंजेंट कंप्यूट करते हैं ना. सिमिलरली यू कैन कंप्यूट टेंजेंट फ्रॉम हियर. टेंजेंट कैसे कंप्यूट करते हैं, dy dx इक्वल टू आपका क्या होता है, since you are having x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, so you can compute dy dx, that is what dy d theta upon dx by d theta from here, and then provide the value of theta at what value, like suppose that theta equal to pi by 6, you want to check what would be the tangent line that you can compute from here. तो इससे आपको slope of the tangent पता चल जाएगा. ठीक है. बट यहाँ पे मेन हमारा कंसर्न है एरिया कंप्यूट करना. एक्चुअली हम जो लाइक हम ये पर्टिकुलर चैप्टर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वर कंप्यूटिंग वॉल्यूम 13 एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे दैट इज एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम में हम समटाइम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, if we are using Cartesian then it is very complex. That's why we will convert those equation into polar coordinates to make problem easy. That's why we are discussing here polar coordinate. So here we are more interested what would be the shape of the curve. Okay, we are not interested like what should be the actual shape. ठीक है ना. इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. That's why we are not discussing each and every point. We are just telling you main point by which you can draw at least shape of the curve. ठीक है ना. If you are putting theta equal to pi by 3, if you are putting theta equal to pi by 3, तो theta equal to pi by 4 भी अगर रखा suppose हमने like theta equal to pi by 4 भी put here, it is coming out to be what? It will be 0. ठीक है. Suppose you are taking what would be the curve shape here. So theta equal to, if you are putting here pi by 3, 60 degree, then r square will be what? Negative. है ना. If you are putting theta equal to 60 degree, r square will be what? A square cos 120 degree. Cos 2 theta है ना. That's why, and you will not get any real value of r. That's why curve will not lie here. ठीक है ना. अब there is a symmetry about x-axis, so you can draw this shape. Symmetry about y-axis, you can draw this. And this is what 3 pi by 4 जो आपको हमने बोला था ना यहाँ पर, you are getting pi by 4, 3 pi by 4 all lines. Like, so this is what theta equal to 3 pi by 4. It is theta equal to 5 pi by 4 and so on. अगर आप सारे पॉइंट्स देते जाएंगे यू विल गेट सेम शेप अगर आप सिमेट्री यूज नहीं करना है. ठीक है ना. सो दिस इज द कर्व. इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. सो सिमेट्री हेल्प अस टू कंप्यूट शेप ऑफ द कर्व बिलो एक्स एक्सिस एंड अदर साइड ऑफ वाई एक्सिस. सो इट्स वेरी सिंपल. और कुछ कर्व्स ही हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा,
लास्ट मैंने शायद आप लोगों से शेयर भी किया है एक पीडीएफ, लाइक ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन टू थीटा। तो आपको लाइक मोस्टली कर्व जो हम यूज करेंगे उनका आपको याद भी हो जाएगा कि हमारा कर्व किस किस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है ना। बट प्रोसीजर शुड बी क्लियर कि हाउ वी कंप्यूट इट। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन टू थीटा। सो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं है, आर माइनस थीटा। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन टू थीटा दिख रहा है ना। आर माइनस थीटा लाई नहीं करेगा एंड माइनस आर पाई माइनस थीटा, बोथ विल नॉट सेटिस्फाई। करेगा सेकंड वाला, नहीं करेगा। जब दोनों ही नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो सिमेट्री नहीं होगी। अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है देन विल से देयर इज अ सिमेट्री। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं, सिमेट्री अबाउट पेरी एक्सिस और नॉट। सिमेट्री अबाउट पेरी एक्सिस है, कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा, इट विल बी व्हाट, नेगेटिव नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, माइनस आर स्क्वायर साइन माइनस थीटा इज माइनस थीटा, बोथ पॉइंट विल नॉट सेटिस्फाई, है ना। नो सिमेट्री अबाउट बाई एक्सिस, नो सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हमारे एक कर्व है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन टू थीटा, सो वी आर पुटिंग आर माइनस थीटा, तो क्या हो रहा है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन टू माइनस थीटा, इट इज कमिंग आउट टू माइनस ए स्क्वायर साइन टू थीटा, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, है ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दिस इज वन पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट विल चेक माइनस आर पाई माइनस थीटा, okay, minus r square a square sine 2 pi minus theta, it is coming out to be a square sine 2 pi minus 2 theta, it is in the fourth quadrant, negative, no sim, ठीक है ना। so no, neither this one nor this one is satisfying, so we'll say no symmetry about x axis, है ना। सेम इक्वेशन तो नहीं आई है, अगर सेम इक्वेशन आएगी then we'll say it is symmetric, so not satisfied, ठीक है। Second thing, again we will check r pi minus theta, r pi minus theta, r pi minus theta, है ना। इसको चेक करते हैं, तो i square equal to a square sin, again 2 pi minus theta is not, minus a square sin 2 pi minus theta, 2 theta, okay. This is one point, and second point, minus r minus theta minus r square a square sin 2 minus theta, not satisfied, so no symmetry, not symmetric about y axis. About origin, we'll check about origin, so check symmetry about origin. So what are the points, minus r theta or r pi plus theta, है ना, sorry, r pi plus theta, so minus r square a square sin 2 theta, it is coming out to be same, so symmetry about origin, है ना। Even one point is satisfied, then we'll say it's symmetric about origin, है ना। What about this, we will not check, if you want to check then we can check r square equal to sin 2 pi plus 2 theta, 2 pi plus 2 theta, that means first quadrant, both points are satisfying, है ना, so symmetric about origin, ठीक है। Now next point is what, after symmetry, so step 1 is done, that is symmetric about origin, now next point is what, step 2, tangent at origin, tangent at origin, put r equal to 0
पुट r इक्वल टू 0 है ना. कब क्या है हमारे पास r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन टू थीटा. ठीक है ना. पुट r इक्वल टू 0, get the value of theta. Sin 2 theta equal to 0. So sin 2 theta is 0 for what values? Theta equal to 0, pi, and it is 2 theta equal to 0, pi, 2 pi, and pi. ठीक है ना. And so on. So theta equal to what? 0, pi by 2, pi. ठीक है. So next point will be what? 3 pi by 2, something like that. So you can get a rough idea from here. So this theta equal to 0 is tangent line and theta equal to pi by 2 is tangent line. So कर्व जो होगा वो यहाँ से like theta equal to 0 and theta equal to pi by 2 को टच करके जाएगा. ठीक है ना. Same thing is here. Theta equal to pi is this line and theta equal to 3 pi by 2. And since there is a symmetry about origin, so you can say like if we draw like in the first quadrant, the same curve would be in the third quadrant. है ना. थोड़ा सा आइडिया यहाँ से हो जाता है. अब स्टेप 3 क्या है? Step 3, get range of r. So r square equal to a square sin 2 theta and maximum value तो sin theta की आपकी 1 ही होगी. So that means r is lying between minus a to a है ना. स्क्वायर है that's why minus a to a. Minus a to a सही है ना. Next is what? Put values of theta and get values of r है ना. So r equal to 0 पे तो theta 0 ही है. So आपको थोड़ा सा step 3, r is lying between a2 minus a. Actually minus a का like क्या है, जैसे कि आपने पिछला कर्व जो ड्रॉ किया था लास्ट कर्व में आपका ये कर्व आ रहा था ना, तो a तो आपका ये था एंड माइनस a दिस वन. इफ थीटा इक्वल टू 0 यू आर टेकिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. सो थीटा r, theta equal to 0, r equal to 0, theta equal to pi by 6, theta equal to pi by 4 and theta equal to pi by 3 and then pi by 2. pi by 2 पर जो वैल्यू है वो आपका 0 है एंड 0 पर 0 है. pi by 6 पर वैल्यू क्या है? साइन ऑफ 2 into pi by 6 है. So sin 60 is root 3 by 2 है ना. So a square under a square है ना आपका, r square equal to a square sin 2 pi by 6. ठीक है ना. तो इट इज इक्वल टू a square pi by 3 that is sin 60 root 3 by 2 है ना. r square is this. So r equal to square root of a root 3 upon 2. Pi by 4, r square equal to a square sin pi by 4 that is pi by 2. It is what? a square. So we can say r equal to plus minus a. ठीक है ना. theta equal to pi by 2, pi by 4 we are putting. Now theta equal to pi by 3 यानी कि r square equal to a square sin 2 pi by 3. 2 pi by 3, it is in second quadrant 120 degree na, it is positive. What would be the value? root 3 by 2 you का ना. Yes. So r equal to yes same होगा. ठीक है. This is a under 3 by 2 same value. So you are getting here r equal to a, yes sorry same values and it is a, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ. I think I am doing it fast, that's why I am doing mistake. Not many. root 3 by 2 under 3 by 2 है ना. Yeah. So now if you are getting some idea from here, theta equal to 0, theta equal to pi by 2 and this is theta equal to pi by 4, this is theta equal to pi by 6 and this is theta equal to
pi by 3. And it is like, this is the maximum value a, and this value at pi by 6 and pi by 3, they are almost same. So you are getting something like, very nice. It is something like something like that. Due to symmetry, actually यहाँ पे और भी point हो गए. Symmetry about line also we can compute, but we are not discussing all those points. So this is the procedure. If you are putting value of theta lying in the second quadrant, for that r square is coming out to be negative, imaginary value, है ना, for r. That's why it will not exist. So this is the curve for I square equal to a square sine 2 theta. So just keep in mind, we are having I square equal to a square cos 2 theta and I square equal to a square sine 2 theta. So you can keep remember these curves. ठीक है ना, ये तो आपका I square equal to a square cos 2 theta and this is r square equal to a square sine 2 theta. Okay, some other. Next is, I discussed cardioid also in the previous class, and you have, I'd given you some example. Okay, r equal to a plus b cos theta, a plus minus b. Lemniscate. Both are lemniscate. I square to a square cos 2 theta and I square equal to a square sine 2 theta. The name of this curve is Limacon. With a loop. And also r equal to, चलो इसको लिखते हैं बाद में. 450. When we are having a equal to b, then it will be what? It will be a cardioid. When a equal to b, तो आपका क्या हो जाएगा? r equal to 1 plus minus cos theta and a. It is called cardioid. Cardioid we have already done in the previous class. Okay, so you have to do it by yourself. Now r equal to, I'm just writing shape of the curve. You can draw by yourself. If you are getting any problem, then you can discuss. So the curve shape is, this is a, this is a, okay, this is b minus a. This total distance is what? A plus b. A plus b whole. Okay, this whole distance is a plus b. Okay, na? So this is a plus b 0 when we are putting theta equal to 0. So what you will get? You will get a plus b. We are taking only for plus first, na? R equal to a plus b cos theta. Okay, so this is the shape. You should try by yourself. If you are getting any problem, then you can discuss. This is one. Second is r equal to a minus b cos theta. Shape of the curve will be what? It will be just opposite to it. Same. बस 180 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया. ठीक है. So same b minus a is this. छोटी सी और चीज ध्यान रखनी है. This is what, here one more thing you have to keep in mind. R equal to a plus b cos theta. A is less than b. A is less than b.
एंड ए इज लेस देन बी हियर आल्सो, ठीक है ना। ठीक है, when you are getting negative value then it will be the loop. You should try it because it is little bit different and comparatively difficult काम, है ना। जब इसको पूरा तो इसके लिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, r इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा एंड r इक्वल टू a माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, r इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा, this is a minus b cos theta. So a plus b cos theta and a minus b cos theta are similar kind of, only we are rotating it 180 degree. ठीक है, and r equal to a plus b sin theta, done. It will be like I'm not making it properly. So this is equal distance actually. ठीक है, and a minus b sin theta, okay. One more example, r equal to a plus b cos theta. This is the case whenever we are taking a is less than b, है ना, a is less than b. Now, when a is greater than b, a is greater than b, in that case, shape would be what? Like, one more thing I forgot to write. The negative value आएगी, that's why we are getting this. A plus b cos theta. It will be something, not circle actually, not with center. It is little bit oval. Something like that. And this distance is what? A plus b. This distance. And this one, a minus b. ठीक है, r equal to a plus b cos theta. Similarly, you can try for r equal to a minus b cos theta. मैंने आपको इसमें भी असाइनमेंट में दिया है. r equal to a is less, a is greater than b के लिए a plus minus b sin theta. ये सिंपल है, इसको ड्रॉ करना, ये लूप्स वाले को ट्राई करना, ठीक है। Other some more graphs I have discussed in the previous class. I'm writing some more specific graphs. Okay, done. One more graph. Example, r equal to sine 2 theta. Rose with 4 leaves. The name of the curve, and it is अगर आपकी symmetry निकालेंगे तो it is symmetric about x-axis, y-axis and about origin. Like these are all tangent. This is the tangent. थोड़ा सा शेप ऐसे आता है. All are equal size in length. I equal to cos 2 theta. वो भी ट्राई करिए, do it by yourself. ठीक है,
तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो सर्कल से स्टार्ट होते हैं। आर इक्वल टू ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए, ठीक है ना? ओके, आर इक्वल टू 2a cos थीटा, आर इक्वल टू 2a cos थीटा। नो, कार्डियोइड क्या होता है? आर इक्वल टू ए 1 plus cos थीटा, दिस इज कार्डियोइड, दिस इज सर्कल विद सेंटर at the origin, center at the x-axis, है ना? And r equal to a 1 plus cos theta, this is cardioid, है ना? 1 plus cos theta, 1 plus sin theta, 1 minus cos theta, 1 minus sin theta, they are all cardioid, है ना? r equal to plus minus and r equal to a 1 plus minus sin theta, ठीक है? r square equal to a square cos 2 theta, a square sin 2 theta, lemon escape, ठीक है ना? r square equal to a square cos 2 theta and I square equal to a square sin 2 theta, lemon escape, ठीक है? r equal to that we have already discussed, I square r equal to cos 2 theta and r equal to sin 2 theta, depend ke maybe a sometime it is given. These are what? These are rows with 4 leaves, है ना? इसको भी ट्राई करिएगा क्या आता है, ट्राई करिए. Okay, so it's done. You should try all these curve and also you should try your tute sheet. You have how much time we are having? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. Example, show that the point you have to do by yourself. It's simple. Point 2 pi by 2 lies on the curve r equal to 2 cos 2 theta. 2 pi by 2 lies on the curve r equal to 2 cos 2 theta. आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है कर्व पर? इट सेटिस्फाई, इज इट सेटिस्फाइंग और नॉट? कर रहा है सेटिस्फाई? कर रहा है नहीं? नहीं कर रहा है तो ये सेटिस्फाई, लाइक इट विल लाई और नॉट? अगर कार्टेशियन के सेंस में बोले तो नहीं, बट इट्स एक्चुअली इट लाइज ऑन द कर्व. ओके, if we draw this curve r equal to 2 cos 2 theta, देखिए 2 pi by 2 का मतलब क्या है? r equal to 2 cos 2 theta, this is the point 2 pi by 2, है ना? यही पॉइंट आएगा. ऐसे नहीं देखते हैं. अगर हम लिख रहे हैं 2 pi by 2, इसका मतलब क्या है? pi by 2 is this angle and r equal to 2 is this point, है ना? If this is theta, and what will the coordinate of this point? 2 minus pi by 2. If we are taking, we are just writing this coordinate in term of this point, what will be the coordinate of this point? Minus 2. So minus 2 minus pi by 2 and 2 pi by 2, they are same. They are representing same point. Check whether it is lying on the curve or not. It is satisfying, but it should also satisfy. But this is the problem with polar coordinate. ठीक है ना? Same coordinate है, but having two different name, we can say. One is satisfying, other is not satisfying. ठीक है ना? तो अभी हम इसके बाद में point of intersection भी करेंगे. तो these type of coordinates are called deceptive coordinate. Deceptive coordinates. They are lying on the curve, but not satisfying equation of the curve. But we can get these points by drawing the polar curves. Understand? तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आपको 2 या 3 क्वेश्चन इस पर गिवन है, ठीक है ना? एंड आपका ट्यूट टेस्ट होगा तो इसमें क्वेश्चन जनरली मुझे लगता है पूछे जाएगा. तो ऐसे ही नहीं बोलना है कि लाई नहीं कर रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट बाय सम अदर वे आल्सो, ठीक है? एंड चेक वेदर दैट पॉइंट इज सैटिस्फाइंग इक्वेशन ऑफ द कर्व और नॉट. इफ इट इज सैटिस्फाइंग देन विल से इट इज लाइंग. यही तो सबको देखने की जरूरत नहीं है, जो भी सेटिस्फाई करे उस, लाइक आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, बट ये सेटिस्फाई नहीं करेगा.
ऐसे वाले देखेंगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, बाय सम अदर वे. So you have to compute these coordinate of this point by different ways. देखो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, n pi plus pi by 2. एक नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. बाय दिस वे यू कैन आल्सो ट्राई ना. तो अगर सेटिस्फाई कर रहा देन विल से इट इज लाइंग ऑन द कर्व. और बाय ग्राफिंग द कर्व, ग्राफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 cos 2 into pi by 2. cos pi is नेगेटिव, ठीक है ना. तो इस सेंस में तो ये लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्यूट coordinate by this way and then check whether it is lying or not. So like in the next class we will discuss intersection of the curves. वहां पे भी आपको ये वाली चीज देखने को मिलेगी, है ना. Then we'll discuss. That is also interesting. Okay. इसमें तो ग्राफ से नहीं आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिस्कस करते हैं. ठीक है.